Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 15 of sustained and controlled drug delivery system. In previous class we were discussing about the immediate release dosage forms and we had discussed that the important consideration for immediate release dosage form is that the action of the drug is limited to the time that the concentration of the drug is above the minimum effective concentration. If the drug has a shorter biological half-life, this time interval may be short and it requires frequent dosing and potentially leading to low patient compliance and suboptimal therapeutic outcome. Many studies have shown that a large proportion of patients do not take drugs as directed. For example, 3 times a day, especially if the disease is not accompanied by strong symptoms, for example, in the treatment of high blood pressure or glaucoma in initial stages. To reduce the frequency of drug administration, it is often possible simply to increase the dose of an immediate release dosage form, as the peak plasma concentration may be too high and lead to unacceptable side effects. Therefore, the drug concentration within the plasma should be above the minimum effective concentration, and it should be fairly below the minimum toxic concentration that is within the therapeutic range. And this is the main reason why modified release dosage forms are developed. These dosage forms can be designed to modify the release of the drug over a given period of time or after the dosage form reaches the required location. So it is further subdivided. Let's begin with the modified release dosage forms that are called as delayed release dosage forms. Delayed release dosage forms can be defined as systems which are formulated to release the active ingredient at a time other than immediately after administration. Delayed release from oral dosage forms can control where the drug is released. For example, when the drug dosage form reaches the small intestine in case of enteric coated dosage forms, or the colon in case of colon specific dosage forms. Delayed release systems can be used to protect the drugs from degradation in the low pH environment of the stomach, or to protect the stomach from the irritation by the drug. In these cases, drug release should be delayed until the dosage forms has reached the small intestine. Often polymers are used to achieve the same. The dosage form, for example a tablet or the granule, before tableting they can be coated with the suitable polymer, or a tablet can be coated with a suitable polymer in order to convert it into an enteric coated form. The polymer dissolves as a function of pH, so when the dosage forms travel from the low pH environment of the stomach to the higher pH environment of the small intestine, the polymer coat dissolves and the drug is released. Once this occurs, the release is again immediate, and the resulting plasma concentration versus time curve is similar to that of the immediate release dosage form. The development of colon-specific drugs and dosage forms may be advantageous for the treatment of local and systemic diseases, including colorectal cancers and Crohn's disease. Especially for peptide and protein drugs, this form of release may also be advantageous for systemic administration, given the more favorable pH conditions in the colon compared to the stomach and the generally lower enzymatic activity compared to the small intestine. डिलेड रिलीज डोजेज फॉर्म्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्रग की रिलीज़ या एक्टिव इंग्रेडिएंट की रिलीज़ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. डिलेड रिलीज़ ओरल डोजेज फॉर्म्स को हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि या तो हम इसे कंट्रोल करते हैं कि जब ड्रग की रिलीज़ हो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी डायरेक्ट कोटेड डोजेज फॉर्म्स में, या ड्रग की रिलीज़ हो कोलोन में, कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी में, या कोलोन स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म्स में. डिलेड रिलीज सिस्टम्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकें
डिग्रेडेशन से ऐसे सब्सटेंसेस जो लो पीएच एनवायरनमेंट में केमिकली डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर हम स्टमक को प्रोटेक्ट कर सकें इरिटेशन जो ड्रग की वजह से कॉज होती है। किसी भी केस के अंदर ड्रग की रिलीज को डिले करने के लिए डोजेज फॉर्म को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कोट दीज डोजेज फॉर्म, क्योंकि पॉलीमर्स पीएच स्पेसिफिक रिलीज शो करते हैं, यानी पॉलीमर्स डिसॉल्व होते हैं एज फंक्शन ऑफ पीएच। सो जब डोजेज फॉर्म ट्रैवल करती है फ्रॉम लो पीएच एनवायरनमेंट of stomach to the higher pH environment of the intestine, polymer कोट डिसॉल्व करता है और ड्रग रिलीज होती है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या कोलोन में पहुंच नहीं जाती या एक स्पेसिफिक पीएच एनवायरनमेंट में पहुंच नहीं जाती। बट वंस इट रीचेस द स्पेसिफिक पीएच एनवायरनमेंट, तब उसकी रिलीज इमीडिएट रिलीज होती है और उसका जो प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व है दैट इज सिमिलर टू द इमीडिएट रिलीज प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, which is shown over here. Now you can say that this curve is of an immediate release dosage form. The onset of action is fast. Once the drug is administered, it actually is available for absorption. It gets absorbed, reaches the minimum effective concentration, and reaches up to the maximum effective concentration and decline back. This is the Cmax that is achieved over this time period, which is the Tmax for immediate release dosage form. But in case of delayed release dosage form, although the curve is similar, but the onset of action or the absorption starts after a specific time period. Here it was started at time 0, but this would be started at 1 to 2 hours after administration of drug. But once the drug is released in the small intestine, it would be immediately released and it would be immediately absorbed, and it will reach the minimum effective concentration and lead to the maximum effective concentration and then decline back. So the curve is much more similar to the immediate release dosage form. The only difference exists over here is that the release of the immediate release dosage form or immediate release drug was at the time when the drug was administered, soon at the time when the drug was administered, whereas the release of the drug from dosage form was time specific, or you can also say that it was at a specific time after the administration of the drug. So this is the Tmax for the delayed release dosage form, and this is the Tmax for immediate release dosage form. Tmax is strongly dependent on the gastric emptying times, which may be quite variable for the delayed release dosage forms, and Cmax is not dependent on the gastric emptying times, but Tmax is. So let's move further and discuss about the second type of modified release dosage form, that is extended release dosage forms. Extended release systems allows for the drug to be released over prolonged period of times or prolonged time periods. By extending the release profile of the drug, the frequency of dosing can be reduced. And for immediate release dosage forms, the time interval, the plasma concentration is in the therapeutic range of the drug can be quite short. Therefore, frequent dosing with its associated compliance problems is required. This is especially an issue in chronic diseases when patients need to take the medicine for prolonged periods of time, often for the rest of their life. Extended release can be achieved using sustained or controlled release dosage forms. These systems maintain sustained release dosage form. These systems maintain the rate of drug release over a sustained period of time. For example, if the release of the drug from the dosage form is sustained, such as the release takes place throughout the entire gastrointestinal tract,
one could reduce the Cmax and prolong the time interval of drug concentration in the therapeutic range. This in turn may reduce the frequency of dosing, for example, from 3 times a day to once a day dosing. Sustained release dosage forms achieve this mostly by the use of suitable polymers, which are used either to coat granules or tablets in case of reservoir systems, or to form matrix in which the drug is dissolved or dispersed in matrix systems. We will be discussing these systems in detail further in these classes. The release kinetics of the drug from these systems may differ. In case of reservoir system, which often follows a zero order kinetics or a linear release as a function of time, whereas a metric system often follows a linear release as a function of the square root of the time. सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म्स ड्रग की रिलीज को मेंटेन करती हैं एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी एक ड्रग की रिलीज डोजेज फॉर्म से सस्टेन की जाती है तो उसकी रिलीज थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट होनी है, तो हम Cmax को रिड्यूस कर सकते हैं और टाइम इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं फॉर ड्रग कंसनट्रेशन के लिए, ताकि वो एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक रेंज पर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करे. सस्टेन रिलीज का ये मैकेनिज्म एक्चुअली डोजिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. लाइक अगर पेशेंट 3 टाइम्स अ डोज ले रहा था तो सस्टेन इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में, तो सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में वंस अ डे डोजिंग के ऊपर वही ड्रग अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है. सस्टेन रिलीज को अचीव करने के लिए हम 2 तरह के मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, रिजर्वोयर सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम. रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर पॉलीमर ग्रैन्यूल्स को या टैबलेट्स को कोट करने के लिए यूज़ होता है, और कोट मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं रिजर्वोयर सिस्टम के लिए. जबकि मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर हम ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं पॉलीमर में या डिस्पर्स करते हैं पॉलीमर में और मैट्रिक्स सिस्टम फॉर्मुलेट करते हैं. इन दोनों सिस्टम्स में रिलीज काइनेटिक्स वेरी कर सकती है या रिलीज काइनेटिक्स डिफर कर सकती है. रिजर्वोयर सिस्टम में ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक रिलीज फॉलो होती है, यानी एक लीनियर रिलीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अचीव होती है. जबकि मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर लीनियर रिलीज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ टाइम. Let's see this graph, which actually shows you the idealized plasma concentration versus time profile of a sustained oral dosage form compared to an immediate release dosage form. Here you can see that this time interval is increased. Sustained release dosage form में हम ये time interval जिसमें effective therapeutic concentration for a prolonged period of time तक के लिए प्लाज्मा में मेंटेन रहेगी, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी Cmax डिले कर देते हैं. इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में ये Cmax यहाँ कहीं अचीव हो सकता था और ड्रग फॉरन डिक्लाइन बैक कर जाती, यानी एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाती. इसमें ये टाइम इंटरवल जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स अचीव कर रहा था वो कम हो जाता. जबकि सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में ये डेल्टा टी को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी ड्रग की कंसंट्रेशन रिजर्वोयर या मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर अवेलेबल है और वो एक्सक्रीशन स्लो रेट के ऊपर हो रही है. जितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी एक्सक्रीशन ज़रूर हो रही है, लेकिन ड्रग की रिलीज़ अपनी डोजेज फॉर्म से स्लोअर रिलीज है. So we are actually delaying this Cmax in order to increase this time interval for therapeutic purpose. ये हम therapeutic range में ड्रग को for a prolonged time interval के लिए रख रहे हैं. The second type of mechanism which is achieved is called as controlled release dosage form. Controlled release systems also offers sustained release profile, but in contrast to sustained release dosage form, controlled release systems are designed to lead to predictably constant plasma concentration independently of the biological environment of the application site. This means that they are actually controlling the drug concentration in the body, not just the release of the drug from the dosage form as in the case in a sustained release system.
Another difference between sustained and controlled release dosage form is that the former are basically restricted to oral dosage forms, whilst controlled release systems are usually in a variety of administration routes including transdermal, oral and vaginal administration. Controlled release of drugs from a dosage form may be achieved by the use of so-called therapeutic system. These are drug delivery systems in which the drug is released in a predetermined manner over a fixed period of time. The release kinetics is usually zero order. In contrast to sustained release systems, the dose in therapeutic system is of less importance than the release rate of the from the therapeutic system. Ideally, the release rate from the dosage form should be the rate determining step for the absorption of the drug and in fact for the drug concentration in the plasma and target. However, controlled release systems are not necessarily target specific, which means that they do not exclusively deliver the drug to the target organ. This may be achieved by the so-called targeted drug delivery system, which aim to exploit the characteristics of the drug carrier and the drug target to control the biodistribution of the drug. Controlled release systems सस्टेन रिलीज प्रोफाइल ऑफर करते हैं, जैसे सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म से। लेकिन जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में, तो कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स आर एक्चुअली डिज़ाइन टू लीड टू प्रेडिक्टिवली कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिस एप्लीकेशन साइट में ड्रग जा रही है। दिस मीन्स के एक्चुअली हम ड्रग कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं इन द बॉडी, नॉट जस्ट ड्रग रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं डोजेज फॉर्म में, जैसे कि हम सस्टेन रिलीज में ड्रग की रिलीज को कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल ड्रग रिलीज में हम एक्चुअली ड्रग की कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा कि हम ड्रग की रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं। एक और डिफरेंस जो सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डोजेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो ये है कि सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म्स की ड्रग्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म में हम वेराइटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स को डेवलप कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसडर्मल रूट, ओरल रूट या फिर वेजाइनल या रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्रग्स, इवन इम्प्लांट्स एज वेल। Controlled release of drug from a dosage form may be achieved by the use of the so-called therapeutic system, जिसके अंदर हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग की रिलीज़ को प्री डिटरमाइंड पैटर्न में करवाते हैं ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। रिलीज काइनेटिक्स कंट्रोल रिलीज सिस्टम में यूजुअली ज़ीरो ऑर्डर होती है इन कंट्रास्ट टू दी सस्टेन रिलीज सिस्टम्स। Dose in therapeutic system is of less importance than the release rate from the therapeutic system. Ideally, release rate dosage form में rate determining step होता है for absorption in case of controlled drug delivery system. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम टारगेट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नहीं कह सकते। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्पेसिफिकली टारगेट के ऊपर ड्रग को डिलीवर नहीं करवा रही है। ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जहाँ पर हम स्पेसिफिकली ड्रग्स को टारगेट एरियाज़ में डिलीवर करवाते हैं उन्हें हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। This figure shows an idealized plasma concentration versus time profile of a controlled release dosage form. Here you can see that once the drug was administered, had reached its Cmax, but this Cmax was delayed for a very long period of time. That means the maximum concentration of the drug would be available for
prolonged period of time, and it is actually achieving a steady state concentration once it gets excreted out and eliminated from the body. So this curve is flattened over here rather than a peak. That's all from this lecture. In next class we will be starting the formulation systems, that is matrix formulation or reservoir system. For your questions and queries, use HULMS portal. Let's end this class with this beautiful verse from Holy Quran, that is, verily along with every hardship is relief, and verily along with every hardship is relief. May Allah relieve our all hardships in these difficult times. Thank you for listening to this lecture. Please take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.